Namaskar. On behalf of Independent Research Ethics Society, we would like to welcome you all in AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series 1854 on Polio Day. Polio Day was on 24th today itself today. So, Polio AYUSH support. And our great speakers are Vaidya Parul Joshi ji, Pranjal Joshi ji, Suparna Mukherjee, Dr. Suparna Mukherjee Madam, and Dr. Sakat Kumar Basu. Thank you very much for joining. So now I would like to request Vishnu Prasad Sharma ji is here. Professor Vishnu Prasad Sharma ji. Yes. Namaskar. Good evening to everybody. Hari Om. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to AYUSH Samriddhi International Webinar Series on Polio AYUSH support. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Vaidya Parul Joshi from Ahmedabad. Namaskar, madam, and welcome you to AYUSH Samriddhi International Webinar. Next, I want to welcome Dr. Pranjal Joshi from Vadodara. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Suparna S. Mukherjee from Bolpur. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Dr. Sakat Kumar Basu, Alberta, Canada. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Once again, I welcome all the eminent speaker, distinguished guests, ladies and gentlemen, to AYUSH Samriddhi International webinar series on polio AYUSH support. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request V.K. Agnihotri, sir, for his preamble. Professor V.K. Agnihotri, sir, if he is comfortable. Professor V.K. Agnihotri, sir, are you comfortable and stable? Otherwise, we will call you after first lecture. So I would like to request Professor Vaidya Parul Joshi ji for his blessings. Madam Parul Joshi ji, स्वागतम स्वागतम। नमस्कार सर, आज पोलियो दिन है और पोलियो जो है वो डिसेबलिंग बीमारी है और बहुत प्रॉब्लम खड़े करने वाली है और जिसको होता है उसको और जिस परिवार में होता है वह परिवार दोनों पीड़ित हो जाते हैं और सभी की जिंदगी जो है वो काफी दिक्कतदेही हो जाती है। तो आज हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स ऑफ पोलियो फॉर हेल्दी प्रोजेनी, पोलियो डिजीज के बारे में एज पोलियो कहीं पे भी वर्णन नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है वो इंग्लिश वर्ड है और हम संस्कृत में अपने सभी संहिताओं को रखते हैं। इससे पोलियो माइलाइटिस से होने वाले व्याधि को हम लोगों ने शॉर्ट में पोलियो कहा है और पोलियो नाम से आयुर्वेद में वह नहीं मिलेगा। वर्ल्ड पोलियो डे established by Rotary International to commemorate birth of Jonas Salk led first team to develop vaccine against poliomyelitis. Polio is a highly infectious disease caused by a virus through fecal oral route. Invades nervous system, can cause total paralysis in a matter of hours and it can also lead to death. यहाँ पे मैंने फोटो रखने की कोशिश की है सब, आप देखें किस तरह किस मैग्नीट्यूड की डिफॉर्मिटी आ जाती है क्योंकि बच्चा जो है अपने आप को एकोमोडेट करने की कोशिश करता है और उस कोशिश के अंदर वो इस तरह विकलांग हो जाता है कि उसका दिखावा जो है वो ट्राइपॉड जैसा हो जाता है।
तीन पहिए जैसा। हम भारतीय बड़भागी है कि हमें ऐसे डॉक्टर्स मिले, एक पूरी फौज मिली, डेडिकेटेड फौज। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस भी, आशा वर्कर्स भी और पेरेंट्स भी। हमारे विलेज के जो सरपंच होते हैं वे भी, सभी ने एकजुट होके जितने भी बच्चों का जन्म हो उन सभी को जो है वो पोलियो पिलाया। और आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो पोलियो मुक्त है। लेकिन ये विषाणुजन्य बीमारी है, तो बार बार रिकर होने की संभावना रहती है। और इसकी वजह से अगर रिकर हो तो वो बढ़ के ज्यादा ताकतवर होके आ सकता है। ऐसा न हो उसके लिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओरल पोलियो जो है उसको मैंडेटरी कर दिया। अब इसका रूट ओरल ही क्यों रखा? जिस तरह बीसीजी हम सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, हम ट्रिपल जो है वो देते हैं, वो टाइफाइड देते हैं, टिटेनस देते हैं, वैसे पोलियो क्यों नहीं देते इंजेक्टेबल की तरह? नहीं दे सकते क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारा, उसी के जरिए वो विषाणु आगे बढ़ता है। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल को ही हमने प्रतिबंधित कर दिया तो वो विषाणु हमारे शरीर में आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये महत्व का कारण है। और पोलियो पिलाने के बाद बच्चे को माइल्ड फीवर जैसा लगे, फीवरिश लगे, बच्चा खाना न खाए, दूध न पिए, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। बच्चे को बराबर ठंडे से सुरक्षित करके बराबर कपड़े लपेट के उसको घर के अंदर ही रखे, उसको ज्यादा स्ट्रेस ना दे और उसको मेंटेन रखे, ऑब्जर्व करते रहे कि उसको बुखार जो है बढ़ना नहीं चाहिए, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ना नहीं चाहिए, वो ज्यादा समय तक सोते ही नहीं रहना चाहिए। इतना जो है वो ध्यान रखे। 24 आवर्स गुजर जाने के बाद बॉडी जो है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। तो पोलियो देने के बाद जो बच्चे को बुखार आता है उसकी वजह ये है कि बॉडी फाइट कर रहा है, क्योंकि हमने वायरस दिए हैं। फिर जो है वो वायरस देने की वजह से वो लोग पूछते हैं कि आप ये वायरस दे रहे हैं, बच्चे को ऑलरेडी जुकाम है, और अगर हमने ये वायरस या दी वैक्सीन तो उससे जुकाम की वजह से पोलियो तो नहीं हो जाएगा। तो हर डॉक्टर यही कहता है कि नहीं, नहीं होएगा। आप जो है उसका जो टाइम है उस टाइम पे, जिस दिन आपको पोलियो पिलाना है उस दिन आप बिना उसको गंवाए पोलियो जो है पिला दे। अब यहाँ पे हम देखते हैं फेजेस, किस तरह ये वायरस आगे बढ़ता है। तो चार महत्व के फेजेस है: एलिमेंट्री फेज, लिम्फेटिक फेज, वायरेमिक फेज और न्यूरल फेज। तो यहाँ पे देखते हैं बाय ओरोफेरिंग्स वो इंटेस्टाइन में गया, तो एलिमेंट्री फेज के अंदर वो इंटेस्टाइन के अंदर गया। इंटेस्टाइन के अंदर जाने से पहले वो सर्वाइकल लिम्फ नोड के जरिए ब्लड के अंदर आके, और यहाँ पे जो है मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के जरिए पुनः ब्लड में आता है और एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज जो है उनको वो ग्रस्त करता है। लेकिन अगर वो जैसे ही ओरोफेरिंग से मुंह में आया, और अगर आपका एलिमेंट्री सिस्टम स्ट्रांग है, आपका अग्नि प्रबल है, तो वो जो है फिसिस के जरिए सीधे सीधे थ्रू थ्रू पास हो जाएगा, और जो बच्चा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हम प्लान करते हैं कि अगर इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन लगता भी है, बच्चे में भी लग सकता है, बड़े में भी लग सकता है, तो वो इन्फेक्शन जब लगे तो बॉडी को बिना ग्रस्त किए हुए बॉडी को वो एबॉर्ट कर दे। और ये एबॉर्शन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सो इन ए हेल्दी बॉडी दैट इन्फेक्शन विल नॉट सरवाइव, ये आज का हमारा मैसेज है। लेकिन अगर किसी वजह से एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यूज के अंदर एक्सचेंज हुआ तो वो ब्लड से आगे जाएगा और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करेगा, तो सेरेब्रम से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक सभी को, यानी कि वेंट्रल हॉर्न्स, डोर्सल हॉर्न्स,
सहित का जो अपने मोटर न्यूरॉन्स है सभी को वो ग्रस्त करेगा, और जब वो इस तरह का ग्रस्त करेगा तब जो है हमें पोलियो का लक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो है हमने 1 2 3 4 फिगर्स रखे हैं वो क्रॉनिक पोलियो के हैं। एक्टिव पोलियो जो है वो यहाँ पे ब्लड में आता है और ब्लड ब्रेन बैरियर जो है क्रॉस कर उसके पहले का जो ये फेज है उस फेज के अंदर जब हमें एलिवेटेड फीवर मिले, हाई ग्रेड फीवर में बच्चा जाए, उसी वक्त अगर हम उसको संभाल ले तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं जाएगा, और अगर वो नहीं गया तो इस तरह की क्रॉनिसिटी उसमें हमें मिलेगी नहीं। फिर इसके अंदर प्रकार कितने बताए हैं, तो मेन 3 प्रकार है, स्पाइनल, बल्बल, बल्बो स्पाइनल। तो स्पाइनल में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है और सबसे कॉमन टाइप है। बल्बल जो है वो ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है, और उसके अंदर जो है जब फीवर आता है तो ब्रेन स्टेम अफेक्ट होती है, और अगर विकलांगता न भी आए तो भी ब्रेन के फंक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होंगे, और वो आगे चल के बच्चे को विकलांगता में ले जाएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ा और बल्बो स्पाइनल हुआ तो अफेक्ट्स बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। तो इसमें कौन सा पोलियो होगा वो इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय द वायरस। तो यत्र संघ ख वैगुण्यात व्याधिस्तत्रोप जायते। पोलियो जो है उसको क्लासिफाई सिवियरिटी के मुताबिक भी किया जाता है, सब क्लिनिकल या इन एपरेंट पोलियोमाइलाइटिस। बच्चे को पोलियो है लेकिन एविडेंट नहीं है, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, बस इतना समझ में आ रहा है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, पता नहीं छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ करता है, खाना नहीं खा रहा है, माँ को धक्का दे रहा है, तो ये जो है वो पूर्व रूप है और तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस जो हमने देखा वो माइल्डेस्ट फॉर्म है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स यानी थोड़ा उसको डायरिया जैसा होगा 1 2 दिन, और फिर जो है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो पोलियो का अटैक आया और बॉडी उसमें से उभर के बाहर आ गया, लेकिन हमें इससे संतुष्ट होकर बैठना नहीं है, बच्चे की इम्यूनिटी बनाए रखनी है। नॉन पैरालिटिक यानी पैरालिसिस नहीं होगा, लेकिन सिम्टम्स जो है वो एबॉर्टिव से सीवियर है, और पैरालिसिस ना हो लेकिन आगे चल के पैरालिसिस में वो जा सकता है। सीधा पैरालिसिस में बच्चा जा सकता है क्या, जा सकता है, और इट्स द मोस्ट सीवियर फॉर्म, अफेक्ट्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पैरालिसिस मसल्स। इस फेज के अंदर हमने अगर बच्चे को नहीं संभाल तो उसको कन्वर्जन्स आते हैं, और कन्वर्जन्स में क्योंकि बच्चा सुकुमार है, बहुत छोटा है, नहीं सह पा रहा है ये सब, तो वो उसमें से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये न हो इसके लिए पोलियो वैक्सीनेशन करवाना बताया गया है। कि क्या होता है पोलियो वैक्सीनेशन से, प्रिवेंट्स पोलियो इन्फेक्शन, पोलियो का इन्फेक्शन होने से रोकता है, एलिमिनेट्स पोलियो रिलेटेड डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटीज हो सकती थी पोलियो वायरस से वो हम रोक सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी, आज इतनी बस्ती बढ़ गई ह्यूमंस की ग्लोबली, तो वो हर्ड इम्यूनिटी एस्टेब्लिश करनी बहुत जरूरी है। हर्ड इम्यूनिटी यानी बहुत बड़े समूह के अंदर व्याधि प्रतिकार शक्ति उत्पन्न करना, और वो कृत्रिम ही हो सकता है, और ग्लोबल एफर्ट्स टू इरेडिकेट पोलियो। अभी इसमें क्या है कि हम ग्लोबल मुसाफिर बन चुके हैं, तो कोई भी व्याधि एक जगह पे है तो दूसरी जगह पे फैलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपना पोलियो प्रोग्राम जो है वो प्रोलॉन्ग करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए पोलियो वायरस किस तरह बढ़ता है, माउथ टू एलिमेंट्री कैनाल, लिम्फ नोड्स, ब्लड, मसल और ब्रेन, फिर मसल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, ब्रेन से जो है वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में जाएगा, और सीएनएस से वो है पैरालिसिस में जाएगा। इसके अंदर बच्चे में जब कभी भी इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स मिलते हैं तो मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ, और जो माताएं आती है उनको भी मैं कहती हूँ,
कि आपको लगे कि बच्चा थका थका महसूस हो रहा है, चिड़चिड़ा, खाना बराबर नहीं खा रहा है, ज्यादा सो रहा है या सो ही नहीं रहा है, या फिर उसको जो चीजें पसंद है उससे वो दूर रह रहा है, या कहीं एक साइड में जाके बैठ जाता है या सो जाता है, अलोन रहने की कोशिश करता है, तो तुरंत जो है वो उसकी इम्यूनिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसको समझ के हमें आगे उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पोलियो वायरस जो है वो एंटेरोवायरस है, यानी आरएनए है, और उसके 3 सेरोटाइप्स है, 1, 2 और 3, 3 प्रकार के सेरोटाइप्स। और उसमें मिनिमल हेटेरोटाइपिक इम्यूनिटी होती है जो सेरोटाइप्स है उसके अंदर, और रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय हीट, फॉर्माल्डिहाइड, क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी कि सूर्य रश्मि में हम अगर बच्चे को रखते हैं तो पोलियो वायरस जो है अगर उसने इन्फेक्ट किया भी है बच्चे को, तो वो उसको छोड़ के मर जाएगा, अंदर मरेगा या उसको छोड़ देगा, अवॉइड कर देगा बॉडी को। गर्मी में रहते हैं, सूर्य की गर्मी रहती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, हीट भी है, तो उसकी वजह से जो है वो एक तो विटामिन डी मिलेगा उसको, उसके बोन स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा बनेगा, और अगर पोलियो लगा भी है तो उससे वो बाहर निकल जाएगा। इतना सिंपल ये है, और ये डब्ल्यूएचओ ने ही बताया है, लेकिन ये जो है इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की हमें जरूरत है। कॉमन सिम्टम्स हमको पोलियो में क्या मिलते हैं, तो मेनिंजाइटिस, फ्लैसिड पैरालिसिस यानी लिम्स जो है वो फ्लॉपी हो जाते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस नहीं मिलते हैं, और पेरेस्थेसिया, सीवियर मसल एक्स, और अंत में पैरालिसिस में बच्चा जाता है। तो ये हमें समझ के आगे चलना चाहिए कि ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है उसको हम ओरल ड्रॉप्स में देते हैं, उसके बाद हमें कुछ करना होता है क्या? तो जो नर्स पैन होगी वो बोलेगी अगर हो सके तो आधे घंटे तक उसको कुछ मत देना, पानी भी ना दे तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो वायरस जो है वो डाइल्यूट ना हो जाए। और आईपीवी जो है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है, उसको हम इंजेक्टेबल के जरिए देते हैं, और वो जो है वो तीनों प्रकार के वाइल्ड पोलियो वायरस होते हैं, और इसके अंदर हम किसी के भी जरिए नहीं दे सकते। हमको वो जो ट्रेंड है, रजिस्टर्ड है व्यक्ति, उसी के पास जाके लेनी जरूरी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ओपीवी ही दे देते हैं, क्योंकि मास में जब देना है तो ओपीवी देते हैं तो इससे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बच्चा चल रहा है, उसके पास स्टिक भी है, उसने अपने पैरों के ऊपर जो प्रोस्थेसिस बोलते हैं वो पहने हुए हैं, और ये उसकी लाइफ बन जाती है। तो आप देखिए इसके अंदर, ये नेपाल में काठमांडू वैली में मिला कि उसको वैक्सीन देने के बाद बच्चे में पोलियो वायरस टाइप 3 जो है वो मिला। हमारे यहाँ पे मैंने ये खास रखा है कि रेलवे के अंदर स्टेशन के ऊपर भी हम लोगों ने पोलियो वैक्सीन दिए हैं। और दूसरी चौंकाने वाली बात है, इंडिया पोलियो वैक्सीन मार्केट इज, उनका प्रोस्पेक्ट है US $949.9 मिलियन। तो बच्चा जो है वो हर किसी का जो है वीक पॉइंट होता है, पेरेंट्स का नहीं, सोसाइटी का भी और राष्ट्र का भी वीक पॉइंट होता है। हर कोई उसके लिए चिंतित रहता है, और वही जो है कमाई का साधन बन चुका है। देखिए साहब, अगर पोलियो हुआ तो पेल्विस जो है इतनी ज्यादा डिसेबल हो जाती है, जो उसका शेप है वो तो बिगड़ ही जाता है, उसकी प्लेन्स जो है वो भी सब आगे पीछे हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो बच्चा है आगे चल के पेरेंटहुड में कितना जाएगा, ये एक चिंता का विषय रहता है। तो सर्जरी करके उसको अपने पैरों पे तो हम खड़े कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर पापा या मम्मी बनना है तो उसके लिए उसकी पेल्विस जो है और उसके पेल्विक ऑर्गन्स जो है
उनकी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे मैं दो बातें बताना चाहूंगी। आयुर्वेद के अंदर ग्रहों का वर्णन किया गया है। ग्रह जो है वो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स है, और गृह्णाति इति ग्रह का पकड़ते हैं, दे ग्रास्प, इसलिए उनको ग्रह कहा गया है। उनकी विशेषता ये है कि वे दिखते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलता कि ये एफ्लिक्शन हुआ। सुश्रुत ने 9 बाल ग्रह बताए हैं, वाग्भट ने 12 बताए, उसमें 5 पुरुष और 7 स्त्री। इसके अंदर कश्यप ने 20 प्रकार के ग्रह बताए, हारित ने 8, योग रत्नाकर ने 5, भाव प्रकाश ने 9 प्रकार के ग्रह बताए, और सभी जो है पाल ग्रह है। अब इसके अंदर हम किसी और ग्रह में न जाते हुए सिर्फ इतना देखते हैं कि ग्रह किनको ग्रस्त कर सकते हैं। तो जी, जिस बच्चे की माता जो है वो शौच नहीं रखती है, बच्चे को पीड़ित, त्रासित, उसको डराती है, धमकाती है, उसका त्याग कर देती है, उसको टाइम पे खाना नहीं देती है, मल मूत्र की सफाई नहीं करती है, इस तरह जो मदर चाइल्ड रिलेशंस होते हैं उसके अंदर बच्चे में ग्रह जुष्ट होने की संभावना है। कश्यप जो है उनका मत ये है कि वो ग्रह जो है वो माता के जरिए बच्चे में आ सकता है, वो कीपर के जरिए आ सकता है, कोई मिलने आया है उसके जरिए भी बच्चे को ग्रस्त कर सकता है। इसलिए बच्चे की इम्यूनिटी को हमें बनाए रखनी चाहिए। तो अभी ग्रह जुष्ट बच्चा हुआ है, वो हम कैसे जान सकते हैं? तो बच्चा डर जाता है, वो बार बार जो है वो आलस जो है वो मरोड़ता है अपने आप को, मुंह से फेनोद्गम होता है, दांत से होठ को वो कचड़ता है, दांत कटकड़ाता है, यानी कि दांत पीसता है। वो रात में जगता है, ज्यादा रोता है, बिना वजह रोता रहता है, दूध नहीं पीता है, स्तन्यपान नहीं करता है, उसका आवाज बदल जाता है, वो स्वर साध, स्वर भेद दोनों लक्षण हमको मिलते हैं। मल उसका पतला हो जाता है और बिना पका निकलता है, शरीर दुर्बल हो जाता है और म्लान हो जाता है। यानी बच्चे का जो मुख खिले हुए फूल की तरह होना चाहिए, उसके बदले थका हरा सा दिखता है, शरीर से दुर्गंध आती है, और वो भी किस तरह की, रक्त जैसी या वसा जैसी दुर्गंध उसके शरीर में आती है। तो इससे हम मान सकते हैं कि ये जो बच्चा है उसमें कोई ना कोई इंफेक्शियस डिजीज लगा है। हम किसी और रोग पे नहीं जाएंगे, सीधे स्कंद ग्रह पे आएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्कंद ग्रह के लक्षण है, एक आंख से आंसू बहना, बार बार सिर का आलोडन करना, एक पार्श्व का निष्क्रिय होना, अंग कठोर हो जाना, यानी बाकी के अंग जो है वो जैसे सुकुमार होने चाहिए वैसे ही होते हैं, लेकिन जिस अंग में ग्रह जुष्ट हुआ है वह अंग कठोर हो जाता है, पूरे शरीर में पसीना ज्यादा आता है, उसकी गर्दन जो है वो अपने आप नहीं ठहर सकती, वो गर्दन जो है आलोड़ित हो जाती है। फिर वो विकृत स्वर से रोता है, क्रंदन बोलते हैं उसको। वो दूर से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्राइडो चार्ट है, और क्राइडो चार्ट दूर से देख के समझ में आ जाता है कि सीएनएस डिस्टरबेंस हो चुका है, और उसके तुरंत ही हमें बच्चे को जो है वो एकदम रिलैक्स कर देना चाहिए, उसको जो पसंद नहीं है वो नहीं करना है, और लिटा ही रखना है, उसको सफाई बनाए रखनी होती है। उसका मुंह आनंद जो है वो वक्र हो जाता है, तो कैसे पता चलेगा? ये आयुर्वेद के सिम्टम्स बता रही हूँ, मॉडर्न का नहीं बता रही हूँ। एक आंख, एक कपाल, यानी कपाल का एक पार्श्व, और उसकी भ्रमर जो है उसका हिलना जो है वो बंद हो जाता है, वो साइड में खींच जाती है। जो फेशियल पैरालिसिस के सिम्टम्स बताए वही सिम्टम्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। फिर मुंह से अधिक लाला स्राव आती है, वो भी हमें फेशियल पैरालिसिस में मिलता है। फिर वो अपनी मुट्ठी जो है वो बंद कर लेता है, उसका मल अवरुद्ध हो जाता है, मल निकलता नहीं है। मल से यहाँ पे हमें तीनों लेने चाहिए, मल, मूत्र और स्वेद। लेकिन पसीना आता है कैसा? हमें पता चलेगा एक जगह से पसीना आएगा,
पूरे बदन से जिस तरह पसीना आना चाहिए वैसा पसीना हमें नहीं मिलेगा। आंख में डर दिखाई देता है, आंख उसकी फटी जैसी रहती है। क्यों? जो सनसेट आइज देखने को बोलते हैं वो अभी नहीं आया है। अभी हमें जो बल्बल पाल्सी जो है तब तक वो बच्चा नहीं गया है, इसलिए सिर्फ आंख में डर दिखाई देता है, आंखें जो है उसकी फटी है। इसके बाद जो है स्कंद अपस्मार में बच्चा जाता है, तब जो है बल्बल पोलियो के पूरे सिम्टम्स अपने को प्राप्त होते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो एक्यूट फेज में हमें कुछ नहीं करना है, और जब क्रॉनिसिटी आ जाती है, जब ज्वर नहीं है, सब कुछ ठंडा हो गया है, बच्चा जो है उसका जहां जहां भी पक्षवध होना था हो चुका है, बच्चा अकड़ भी गया है, ऐसी परिस्थिति में बिना डरे हमको क्या करना है? वातहर तेल से सर्वांग अभ्यंग करना है। वातहर तेल कौन सा ले सकते हैं? मैं तो बला तेल इस्तेमाल करती हूँ, और उसकी ही शिरोधारा करती हूँ, क्योंकि बला में जो ताकत है वो किसी और तेल में नहीं है। और आचार्य ने, सुश्रुत ने जातो तो तुरंत ही बला का उपयोग बताया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बला तेल का उपयोग करती रही, और मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते रहे। मुंह से उसको क्या देते हैं? पिप्पली मूल्य, ब्राह्मी, यष्टि मधु, ये चूर्ण सम मात्रा में शहद के साथ उसको हर 2 घंटे में पिलाते रहना चाहिए। डीका माली इज द ड्रग ऑफ चॉइस। इसके साथ एकांगी रस या बृहत व चिंतामणि रस देना चाहिए। यदि एट्रोफी हो रही है तो षष्टिकशाली पिंड स्वेद करे। अगर षष्टिकशाली पिंड स्वेद के लिए नहीं है प्रावधान तो क्या कर सकते हैं? खिचड़ी तो कोई भी बना सकता है। एरंड स्नेह में खिचड़ी बनवाओ, और वो जो खिचड़ी है उसका सीधा मर्दन शरीर पे करना है। अभ्यंग के बाद मर्दन करना है। उसमें क्या करना है? बच्चे को उल्टा सुलाना है, पूरी स्पाइन जो है ऊपर से लेके नीचे तक, दोनों पैरों के अंदर, पैर के तलवे के अंदर करना है। उसके बाद जो है पुनः उसकी ग्रीवा पे आना है, दोनों हाथों के ऊपर उसको मलना है। इसको कृष्णा को, आप मानेंगे नहीं साहब, हफ्ते में बच्चा जो है इतना प्रसन्न दिखने लगता है कि हमें भी आनंद आता है कि चलो आयुर्वेद में हमें इतना जल्दी रिजल्ट मिला। लेकिन ये सब होते हुए भी एक प्रश्न बार बार आता है कि जब हमें पता है कि जन्म से मरण तक हमारे पूर्वज सुवर्ण का प्राशन करते रहे हैं, और सुवर्ण की वजह से हम इतने दशकों नहीं, सदियों नहीं, पीढ़ियों से हम लोग स्वस्थ रहे हैं, तो उस सुवर्ण को हम क्यों पुनः अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं? सुवर्ण प्राशनम हेतत् मेधा अग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्णम ग्रह आपहम। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से दूर रखने वाला है। मासात यानी पूरा महीना, आज पुष्य नक्षत्र है और गुरु पुष्य है। आज से अगर आपने सुवर्ण प्राशन देना शुरू किया, 1 महीने तक हर रोज आपने दिया, तो क्या मिलेगा आपको? आसात परम मेधावी व्याधि भी न च दृश्यते। किसी भी ग्रह से, किसी भी प्रकार के व्याधि से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी व्याधि उस बच्चे को ग्रस्त नहीं कर सकता। टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, बच्चे को बच्चा ही रखना है। आप उसको 3 महीने के बच्चे को बोलो ये चलता नहीं है, और 1 साल के बच्चे को बोलते हैं चलता नहीं, बोलता नहीं है। 5 साल के बच्चे को बोलते हैं दाढ़ी मूछ नहीं आए हैं। 10 साल की बच्ची को बोलते हैं इसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तो दैट इज, हम, हमारी जो है पुख्तता का अभाव है। हम कहीं ना कहीं मेंटली डिफॉर्म्ड है। बच्चा जिस उम्र का है उसी के मुताबिक ही बिहेव करेगा, और वही अपेक्षा समाज को भी रखनी चाहिए। तो षड्भी मासै ही श्रुतधरः सुवर्ण प्राशनात् भवेत्। डेमोक्रेसी है सब। हम बोल नहीं सकते कि आप पोलियो डे के दिन सुवर्ण प्राशन करो, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपके पास पोलियो की भी चॉइस है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है।
It's the oldest democracy and the biggest democracy in the world. तो आज चाहे तो पोलियो का वैक्सीन का उपयोग करे, चाहे सुवर्ण प्राशन का करे, चाहे दोनों का करे, लेकिन ये ध्यान रखे कि बालक का बचपन पुनः नहीं आएगा। बालक के बचपन को उससे अलग न करे। करबद्ध विनंती है सभी को आज के शुभ दिन पर। आपने मुझे इस डायस से बोलने के लिए एक अवसर दिया, उसके लिए आप सभी की मैं बहुत बहुत हम आभारी हूँ। सौभाग्यशाली हैं मैडम, आपका ही मन चाहिए। हम सौभाग्यशाली। थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत ही शानदार ढंग से आपने प्रतिपादित किया विषय। मेरे ख्याल से कुछ सेंटिमेंटली बचा नहीं, साइंटिफिकली एंड सेंटिमेंटली बोथ excellent, great, salute. Now I would like to invite Dr. Suparna Sanyal Mukherjee madam for another aspect of sociology, anthropology. Dr. Suparna Sanyal Mukherjee madam, welcome. हिमांशु जी से मैं प्रार्थना करता हूँ 20 मिनट मुझे दीजिए, फिर हम दोनों ही हैं। डॉक्टर सुपर्णा सन्याल मुखर्जी मैडम। Yes, very good evening Very good to evening. all dignitaries over here who has been explained the auspicious topic, which is also discussion in this AYUSH SAMRIDDHI platform. Especially the polio and the polio day observing is a very scientific manner which we are doing today, and we are practicing, and we are also generating awareness among the people. Though the today's world is polio free, still we have the duty and responsibility to remember and recall. Though it is polio free, still we should be more aware that there should not be any kind of polio child may born. Number. So today I would like to emphasize on this polio immunization and its late effects. Especially, it has been observed that the polio is a pre-vulnerable and this threatening disease in the society at large. All adults and children need to be immunized to protect against polio. And polio symptoms vary from the different person to person, and it is the type of mild flu-like symptoms to paralysis, and possibly the death may also occur. The people who have had polio may experience effect later in life called the late effects of polio. When physical symptoms emerge 15 years or more than the first polio infection, it may occur anytime in any place of the human kingdom. Aids and equipment, especially the including orthoses, then the braces, then walking sticks, and the electric scooters, and can help also relieve the symptoms to the late effects of this polio. But what has happened? The polio, which is referred medically, and poliomyelitis is the serious disease caused by infection with any of the three strains of the poliovirus. The virus is live for 6 weeks, and it is spread via water, food, or hands contaminated with the faces, like or throat secretions of someone who is infected with the virus. The infected person may or may not have any symptoms but can still spread the virus. So, what is happening over here? Symptoms vary from mild flu like symptoms to life threatening paralysis. In less than 1% of cases, the polio causes permanent paralysis of the arms, legs, or breathing muscles. Between 5% to 10% of people who develop paralytic polio, they may die. The physical symptoms may emerge 15 years or the more than the first polio infection. These new symptoms are called the late effects of this polio. They include new muscle weakness, joint and muscle can also be also may have the fatigue. So, in the sociological point of view, we have seen that there is no kinds of symptoms may happen in the rural area, the rural Bengal or rural India. So people are very lack in the knowledge. They don't have the any ideologic. They don't have any type of conception. What is the polio?
So in that cases, the immunization against polio is also very important because immunization is the best protection against polio. Immunization is recommended for all infants like children and adults. The polio vaccine is given to children at 2, 4 and 6 years of age. It's 6 months of age and at 4 years of the age. So 2 months to 4 years. This is the time period when you can incorporate the polio vaccine. This vaccine is combined with the vaccines for other infectious diseases too. So polio vaccination, though there was a slogan and there was a WHO was taking step forwardness that within 5 years, till 5 years of age, they have giving the polio vaccination, and this vaccination on the basis of that, we have made the polio free world. So immunization against polio for the children, especially the babies at 2 months or 4 months or 6 months, in the form of diarrhea, tetanus, whooping cough, hepatitis B, polio, and hemophilus immunization type of HIV, hepatitis B2, and the vaccine is 6-in-1 vaccine is also required. The children of 4 years, a booster dose in the form of a diphtheria, tetanus, whooping cough, polio vaccine is needed. For 4-in-1 vaccine is needed. Children up to the including 9 years of age catch up the immunization with combination vaccines is available. And the Aboriginal and the Torres Straits Islanders people who has been the refugees, those are coming from the different parts of the world, they also carrying this polio virus for their and their immunization system also spread it in our country, and we have suffering from this polio. And immunization against polio for this adult, what the adult is happening, it is recommended that all adults make sure that they have been vaccinated against polio. Polio vaccination is also a course of 3 injections with an antiviral on an interviral of 4 weeks between the doses. If they have not received at least 3 doses of polio vaccines, they can also catch up this. There is no system to cope up. The polio may catch up at any time. So people training to travel to Afghanistan or the Pakistan where polio is still endemic. And this polio virus is also spreading over there, and it is also coming in this creating the endemic too. The people intending to travel to the areas where there has been a recent outbreak in the circulation of vaccine derived polio virus, and the global polio eradication initiative has been taken for eradicating the polio from the world as such, because there should not be any child polio, this adult polio, and not the polio after effects of this polio vaccination should not be there. So this has been taken, and World Health Organization and Global Polio Eradication Initiative are conjointly doing this program for their eradication of this polio system. And the symptoms are very common in that case is the fever, tiredness, the weakness. My earlier speaker also emphasizing on this, especially the child or the children, those who are suffering from, if there is a symptom like they are very shy, they have become shy, they couldn't work, they couldn't go for the game, they don't want to go to the school, which food they like, they should not, they are not wanted to take that particular food. So nausea and vomiting, muscle stiffness, these are also happening for this, the symptoms in the first step, and it spreads to the nervous system. And it has been observed that those child or children is suffering the meningitis in their early childhood system. They are the later stage, when they are recovering, so they also can suffer from this polio. And severe muscle pain, stiffness of the neck and back with or without paralysis. And this paralysis may happen at any time, the swallowing and breathing problems, and that death may occur at any time in any cases, and permanent paralysis also occurs.
And this how we can be the polio could have been spread, and how we can see to it that is the person may develop symptoms within 3 to 21 days of coming into contact with the virus, and will be most infectious 7 to 10 days before and after the beginning of the symptom. So people remain infectious for as long as the virus continues to be expected in their faces, and this which may continue for up to 6 weeks. But typically, the virus remains in the throat for 1 to 2 weeks. And risk factor of this polio, risk factors in cases of this pregnant woman, the elderly people, the very young people, and the people with a weakened immune system, such as those who have the HIV. And these cases, especially the case of in parts of the world where the sanitization, the poor sanitization and immunization program are not widespread. So we have to look after our the all systems which is required, and which is we have to look after the system is needed. And when you are traveling to one area to the another area, polio is common for where an outbreak has recently it may occur, and recent may occur after COVID. Also, it has been observed that there is a polio infection has happened. And when we are diagnosing this polio, they take a medical history. When you are diagnosing, then this history is also required. Perform a physical examination of the symptoms like the neck and back pain, stiffness, abnormal reflection, swallowing and breathing problems, such and such. And this, in cases of this treatment, especially the antibiotics may applied for this the persons those who are suffering from pain relieving meditation, portable ventilation to assist breathing, the meditation to reduce spasms, moderate exercise, massage, etc., etc. Then the late effect, what may happen? The late effects of polio is an umbrella term used to describe symptoms related to a history of polymyelitis. So, post polio syndrome (PPS) is a subcategory of LUP, and it is a diagnosable neurological problems and conditions may happen at any time. So you may suffer from dementia. You have the stiffness of your muscles. You should not be work properly. You cannot do anything. And it has been happened in cases of this, especially those who are living in the urban area. But in rural cases, the people are walking mostly, and they have worked hard, and they are not getting proper nutrition. But the immunization is also very weak. Still, their physical exercise is controlling their affection or infection from this polio. Then the fatigue is also, it is also the fast food, having very fast food. Obesity is also causes for this polio factors, and this the sleep problems is there. You cannot sleep properly. There is so many things may happen in these cases. And the post polio syndrome, that new symptoms of the pain and weakness continuing for at least a year. And that cases, the medical history, you should follow this medical history where there are any one of the family may suffer or not. No other clinical explanations on the symptoms which may be affected, which may affected, which may not be. So this is also the causes for this. And if those persons who are suffering from the epileptic fits, in that cases also polio may occur. So the late effects polio, you should know, we should be aware for that the muscle fatigue and pain due to reduced muscle tissue, pain and sleep disorder, breathing problems from postural side, because the erect posture what we are maintaining today. So we should have the capacity to carry our weight. So we need the capability of our bones and muscles, and reduce bone density from long term lack of weight, which is bearing, and the neurons and nephrons, and this nauseatic
feeling and the drowsiness. These all are the fatigueness, muscle fatigue is all are the causes for this late polio infection, and it may happen after recovery of this polio. And to avoid this, the avoid physical over exercise, then the trace. These are have to be, and using of aids of equipment like the orthoses, the braces, the walking sticks, and electrical scooters. These are the conditions we may taking for this recovery of that. And that is another one point is to be noted over here. That is the rehabilitation for post polio syndrome. Rehabilitation in that case is the orthostes, the leg braces, which we are also using, and the occupational therapists, which help the functioning and what home or in the community. So these the speech pathologists, the speech therapy, then psychologist, and this the social workers. So to assist for the to get the awareness generation, which is the perfection to make the society very nicely, and to work the people who are living in the society is very important for this sociological aspect and anthropological point of view. But in that cases, the anthropos, when the anthropos become and develop their erect posture, and that cases they are not suffering, but in it is the upward characteristics which may not be transformed generation to generation, but the history of the family is needed to give the better quality of life. In that cases, you can talk to the doctor suggestions. Then the Ayush have the very interesting point over here. The Ayush can recover the polio, and they can also protect those from the beginning time. So there is a medicine, there is a touch therapy, yoga therapy, and then there is the Unani Siddha, which may cure, and it cannot be the and which may cure from the grassroots level, because this may happen in any case of the rural sites. This practicing the touch therapy, healing therapy, heal and touch therapy. It is a very indigenous technology, and especially the tribal community, those who are practicing, and from there they are recovering this polio, and they know the Ayurvedic system, like they know the which root is causes can recover the polio system, and for infection of the polio, they cannot, they may not get, they may get, they may not get the polio vaccination. Still, they are recovering polio with the indigenous process of technology. Thank you very much. Thanks a lot for giving me such an opportunity to say something on this platform. Thank you. Thank you very much. Now I would like to have blessing on from Dr. Sakat Kumar Basu. Welcome, Dr. Sakat. Welcome. Thank you. Thank you very much. Uh, I will highlight mostly because there has been so much nicely explained. Without overlapping, I will just highlight about the little bit on the polio epidemics and where we still see polio around the world, which is important to know. So major polio epidemics that were unknown before 20th century, up until that time, polio was an endemic disease worldwide. And some others who have infected or the infection is mild have been able to pass it to their either through their babies, through breast milk. As a result, infant who encountered polio infection generally suffered mild symptoms and acquired immunity to the disease. With improvement in sanitation and hygiene during the 19th century, the general level of herd immunity in the population declined, providing circumstances where epidemics of the polio become frequent. Following widespread use of vaccines in and around the 1950s, slowly polio started becoming eradicated in various parts of the world, and efforts completely came under control in and around 1988 around the world, with the polio vaccine becoming more accessible and the distribution of the polio vaccine under the various World Health Organization, United Nations observation in very poor developing countries across Asia, Africa, Latin America. Slowly the disease started getting eradicated. The global effort to eradicate polio started with the famous Global Polio Eradication Initiative, starting around 1988, led by WHO, UNICEF, Rotary Foundations, and others. And polio was other two diseases that was targeted during that point in time. One was polio, another was the guinea worm disease, particularly predominant in the African countries.
But so far, the only disease completely eradicated till date, very, very successful, is smallpox, declared completely eradicated in 1988, and I find rinderpest disease in and around 2011. So the effort towards controlling polio has still been continuing in various parts of the world, and it has shown significant improvement around the countries, with a very few small endemic zone where polio is still prevalent. The efforts have hugely reduced cases of polio. So it was around 350,000 in 1988 to around only 483 cases in 2001. So by 2015, polio was believed to be naturally spreading in only two countries in the world in Asia, and that is Pakistan and Afghanistan. Other than these two regions, it has been under total control in all other countries across Asia, Africa, and Latin America. Global surveillance for polio was conducted, and between around 219, 147 cases was reported in Pakistan, around 20 cases in Afghanistan. In 2020, 84 cases reported from Pakistan and 56 in Afghanistan, and 32 countries other responded to various different forms of polio, but not of a major concern. In 2021, post-pandemic, there were just 6 confirmed cases of poliovirus, 1 in Pakistan and 4 in Afghanistan, and 1 in from the Western African nation of Malawi. But however, the WHO suspects that the information of complete eradication or really reduced eradication of polio in Pakistan and Afghanistan may be a false rumor, as because there is not accessibility of vaccinators and stuff to work deep in the rural infringement areas, because there is heavy infringement of terrorist and other groups, and also other very much fundamentalist group that believe that modern treatment of polio is something acting against their god and stuff. And as a result of these bullshit reason, many of the polio vaccine workers and stuff from various organizations, both government and non-government, have been killed mercilessly in both these two countries. So the lack of education, awareness, sensitivity about modern health, lack of hygiene, lack of sanitation in many countries, and in some culture where there is a very strong dictatorial presence, lack of rule and things, it has become a bit of a problem in complete eradication from the world. So Pakistan and Afghanistan are the two countries. Now it is also believed that in some of the Middle East countries such as Syria, Lebanon, and other areas where there is a constant fight going on, there is constant unhygienic condition because of the lack of the sewage systems and other operating system breaking down, lots of opportunity to vaccination due to continuous stretches of war, poor health and hygiene, poor quality of water, huge chances of contaminated feces to be coming in contact with drinking water and then getting transmitted to the people is present. However, there are no solid data or recorded data from these war zones, because it is almost impossible and extremely difficult to collect this data from war-torn countries, whether it's Yemen, Libya, Syria, or Pakistan, Afghanistan, where the economy is collapsing, people are suffering, and they are living in crowded places with very little vaccination. And because of the religious incarceration in these countries, there is high chances that there is still presence of polio in this country. According to World Health Organization, the last remaining region with positive records of wild polio cases has been reported only from Pakistan and Afghanistan from South Asia. They do not have responses from in other countries. In 2011, around 80 cases of polio were reported from 35 districts of Afghanistan. And still, over this 10 years, because the healthcare has also faced and undergone deprivation and destruction, particularly under the new regime, it is very difficult to assess what is the real situation of in these two countries, and why many of these countries, like many of the religious clerics and stuff, and other support groups or power groups, use these children who have suffered from polio and stuff for asking them to beg during the Hajj time in these in Saudi Arabia and stuff. So this was a big source of income from them. And so there was a genuine and general interest in even promoting in some poverty-stricken areas of this country by these groups which control these two countries. So this is sad, morbid, but this is very true. So there needs to be education, awareness, and better coordination to eliminate polio from the last corners of the world where it has been almost achieved to be eradicated from the whole world.
I also extend my sincere gratitude to all the speakers who have very nicely presented various distinct aspects of polio and various disease cycles as well as the symptoms and treatment. So thank you very much. It is getting late. So I'll end my presentation here, and thanks once again, Ayush Samriddhi, for giving me this opportunity to communicate. Thank you very much. Shekharji. Really, both of you have highlighted different aspect of the disease. Great, very nicely explained. Next webinar is on Ayush Ahar. So please stay with us for more half an hour. Our third webinar is on that. Professor V.K. Agnihotri, sir, request to conclude. Thank you, Professor Pawan Sharma. Really, though it is a old information that we were having poliomyelitis and then it was successfully eradicated out, and again now it's having its show